Over to you, Madhav. Yeah, big story coming out of UP, and I think now we have a fairly interesting number over here. There are 66 out of 80 trends that we're talking about. 46 for the BJP, no surprises there. But looking at this number, Jay, are you surprised? It's 20 for the Samajwadi Party, it appears, from these trends, and it's all over the state. It's across regions. Yeah. This is a fairly significant number. Actually, you can, break it down with a few indicative seats. Let's look at Jalon, Narayan Das Ahirwar. This is a Jatav candidate. These used to be earlier strongholds of the Bahujan Samaj Party. Yes, Bundelkhand. So now the key is, has the SP strategy of taking local level BSP leaders worked? That's something that's emerging into a debate now. Because wherever the old, let's not forget, of the 10 seats that the BSP won in 2019, a lot of them were in eastern Uttar Pradesh, Purvanchal. Yeah. That's where again the SP is picking up seats. So the story is, has there been a question mark still? Has there been a BSP collapse which is maybe aiding the opposition? That's the question mark. Azamgarh Ghosi, but what about Raebareli, Amethi? Quick look, Raebareli, Rahul Gandhi leading, Amethi, Smriti Irani leading. So this is pretty much along expected line. Well, Prajwal Revanna trailing from Hassan. That's the latest coming in. Kangana Ranaut trailing by 1,245 votes in Mandi. Home Minister Amit Shah after the first round leading with 3,000 votes. Contesting Amit Shah. I mean, I read a story that there's no contestant. No, there is a lady. There is. Forgetting her name, there is a lady. BJP is leading. 1 minute. BJP is leading on 24 in West Bengal's seats out of 42. So far, early trend, single largest party. Also, if you look at those on the screen tallies, DMK ahead in 24 in Tamil Nadu, ADMK on 1. Chhattisgarh BJP is ahead on 10 out of 11. Andhra Pradesh BJP, NDA and YSRCP are Congress 2 seats in Andhra Pradesh. Which seats I don't know. Telangana, BJP is leading Congress party in Telangana. And look at the union territories. In Jharkhand, BJP is leading on 10, Congress on 4. Madhya Pradesh, BJP leading on 25, Congress on 1. And in Karnataka, BJP ahead on 22, Congress on 6. Now I'll tell you one story here. In Karnataka, Chamarajnagar, which was expected to be the BJP's lost seat. Now BJP is leading there, which means there could be a story in the old Mysore region. The alliance with JDS must be clicking. So Chamarajnagar is where the earlier member of parliament passed away just after the polling, right? 1,800 votes only they won. Well, let me come in at this moment. Let's listen in to Bansuri Swaraj and Shashi Tharoor, both of them talking about their own seats. Let's cut across. अगाध विश्वास है और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि आज भारत की जनता चयन करेगी भाजपा की लोक कल्याणकारी नीतियों को, चयन करेगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों को, चयन करेगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को। मैं जानती हूं तीसरी बार फिर मोदी सरकार। I have no doubt. The expectations were set on the 26th of April, not today. Because the fact is that once people have cast their votes and the boxes are sealed in the strong rooms, there is frankly no further room for any argument or debate, right? I mean, this has happened, it's happened. So people have voted. All we have been doing is waiting 6 weeks to find out how they voted then. So whatever has been said since then, including the exit polls, can have no bearing on the outcome because the outcome was established on the 26th of April. Okay, sir, there is always an analysis that, the cross-voting helped you in the previous elections. No. This time is at a tight 3/4 I fight. definitely do not buy that theory. I know for a fact that there was no cross-voting in the last election. Mr. Divakaran had a very, very strong belief that he was going to do well, and I think the left rallied behind him very solidly. We will win on our own merits or we will fail, but my own view is we are winning. Some bad news coming in for the BJP. Again, early trends, but Anna Malai trailing in Coimbatore, Pankaja Munde trailing in Beed seat. Also, BJP leading on 9 seats in Telangana at this moment. And Coimbatore is a very important seat for the BJP, and
in Tamil Nadu. If Annamalai, who is the BJP's Tamil Nadu president, if he's trailing, what does this mean? We'll go to that debate. But joining me from Gujarat BJP now, Arjun Morwadia, who's with us. Arjun Morwadia ji, सवाल इतना ही है that कांग्रेस गुजरात में कितनी सीटें जीत पाएगी? कांग्रेस की जीतने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अपनी जमानत बना के रखे और उसकी जो आइडेंटिटी है विपक्ष की, वो तो गुजरात में आज है ही नहीं। गुजरात विधानसभा में भी एक 182 सीट में से 156 भारतीय जनता पार्टी के पास है और ये चुनाव के बाद 160 से ज्यादा हो जाए। देश में भी कांग्रेस के पास विपक्ष की मान्यता आज भी नहीं है। अभी तो जो नेशनल पार्टी का उसका स्टेटस है, उसके सामने भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है और जो प्रोग्राम वो लेकर आते हैं वो प्रोग्राम और वो लीडरशिप 2014 में फेल हो गई, 2019 में फेल हो गई, फिर से उनको रिपीट कर रहे हैं जब जनता उनसे ऊब चुकी है। इसलिए गुजरात में तो जीरो पॉसिबिलिटी, जीरो सीट है और जमानत बचा के रखे इतना ही उनके पास ठीक है। बाकी ये राहुल बाबा से कुछ नहीं हो पाएगा। अर्जुन मोढवाडिया जी, एग्जैक्टली 3 महीने पहले आपने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की थी। 5 मार्च को आपने ज्वाइन किया था। आप एज एन इनसाइडर, एक्स इनसाइडर, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि कांग्रेस ग्रसित है जिनसे गुजरात में और नेशनल लेवल पे, जिसको लेकर के आपको भी पार्टी छोड़नी पड़ी? आज अगर चुनाव के आप नतीजे, रुझान देखें तो क्या वो प्रॉब्लम थी जो उस वक्त आपने देखी जिसकी वजह से आपने छोड़ा? देखो, मैं तो अभी मेरे जो रोल था कुछ सच बोलने का, उनके सामने सच रखने का, लेकिन वो रोल रहा नहीं। इसलिए मैं उसको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, लेकिन इंट्रोस्पेक्ट तो तब करना चाहिए था जब राहुल गांधी ने, उनकी कैबिनेट ने बनाई हुआ एक ऑर्डिनेंस पब्लिकली फाड़ दिया, जिसको कांग्रेस प्रेसिडेंट का कंसेंट था, जिसमें पूरी कैबिनेट उनकी थी, उनका कंसेंट था और उन्होंने पब्लिकली आकर कह दिया कि मैं उसको रिजेक्ट करता हूं। ड्रामेटिक बेस, अगर उस समय ये रोल मैंने किया होता तो मैं कांग्रेस से 6 साल तक बाहर चला गया होता। लेकिन वो अपने पिताजी की पार्टी मानते हैं, सब लोग उनको भी वहां के मानते हैं। उस समय जो उनकी बिहेवियर थी, उस बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं है। मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन दिल में अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही लीडर के प्रति कोई सम्मान नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है प्रोग्राम की और बिहेवियर की। इसकी वजह से ये पार्टी, जब तक वो लोग मानने वाले भी होंगे, लेकिन जब तक कुछ चेंजेस नहीं होगा तब ये होने वाला नहीं है। और इस दफा तो 2019 से भी बुरी तरह से ये कांग्रेस पार्टी फिर से पी गई। Sanjay Jha, that's an insider telling you what's wrong with the Congress party. Doesn't the leadership of the Congress party realize what's wrong? No, I know Arjun Ji very well. I know him personally very well. He's a very good man. I think the Congress's biggest mistake, Navika, in my opinion, was when we fought hard and actually gave the BJP a real run in 2017. Instead of stepping up, the Congress actually allowed Gujarat to dwindle down. And I have always believed that if you want to checkmate Mr. Modi and Mr. Shah, Gujarat should have been always the primary focus for the Congress party. Because if you humbled them in their home state, beard the lion in their own den, it would have given a massive tailwind to the Congress nationally. So the Congress took the eye of Gujarat. So then what gives you the confidence that the Congress will do way better than it has done in the last few elections? I think there are two factors behind it. Number one, I think after 2 brutal losses, everyone in the party realized this is an existential challenge. The second positive that I don't think we should deny, that Rahul, I think, has reinvented himself rather well. Rahul has reinvented himself, Anand Ranganathan. You know, this is where this is the platform where I would like to say that the BJP by the evening would unanimously choose Rahul Gandhi as their best supporters and best bet. Sarcastic comments without any can I please relevance. say after losing, if the results are to be believed, in the next couple of hours, how on earth can anyone, Sanjay, you're a dear friend, Tessin is here, can still continue with Rahul Gandhi in the Congress is beyond me.
तहसीन पूनावाला. I think After Arjun Motwadia question, I want to ask him really, Arjun जी नमस्कार, आपसे बहुत मुलाकात होती थी गुजरात में. मेरा सवाल बहुत सिंपल है कि जब आप बीजेपी में आ गए हैं, सालों से आप हम लोगों को कागजात फाइल्स दिखाते थे नरेंद्र मोदी भाजपा के खिलाफ. आज क्या हम लोग मान ले कि वो सब झूठे फाइल थे? मैं आपसे सीधा सवाल, क्या आप मतलब, क्योंकि इतने सारे लोग इधर से उधर जा रहे हैं, तो इतना एक फिलोसॉफिकल सवाल आपसे पूछ ही ले कि आपके दिमाग और दिल पे क्या गुजरती है कि सालों से आपने हम लोगों को कुछ बताया और अब आप वहीं मोदी जी की पैरवी. ओके जी, अर्जुन मोरवाडिया जी, सबा नकवी जी का सवाल है, जवाब दीजिए. देखो, मैं कांग्रेस में था, पूरा कमिटमेंट के साथ जो मुझे दिया गया था वो रोल मैं निभाता रहा और सालों तक, 2 दशक तक मैं जो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी थे तब भी और सेंट्रल में गए तब भी, और मेरा रोल था जो रूलिंग पार्टी है उनकी कुछ भी कोई भी छोटी मोटी गलतियां भी है तो मैं निकाल के जनता के सामने रखता था. लेकिन तकलीफ ये है कांग्रेस में कि कांग्रेस में जो सच बात करते हैं, लीडरशिप के साथ भी हम सच बात करते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता. जबकि मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी, आपको मैंने भी उन पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को कहा था कि आज आपको मेरी क्या जरूरत. गुजरात में 156 सीट है, ऑपोजिशन की रोल में भी कांग्रेस नहीं है, देश में भी तीसरी दफा नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं और 400 प्लस से बनने वाले हैं. लेकिन उसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी को कुछ अच्छा या मुझे में दिखती. लेकिन कांग्रेस पार्टी में चाहे आप कितने भी कमिटमेंट से लड़ो, लेकिन लीडरशिप के सामने प्राइवेटली पार्टी फोरम में भी बात रखो तो उसका बुरा लगता था. वहां तो बस तारीफ करनी है, क्या नेता को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, लिबास उसका अच्छा है, उन्होंने क्या बोला है, नहीं बोला है. मोहब्बत की दुकान की बात करते थे तो हम कहते थे कि इंटरनल पार्टी में मोहब्बत शुरू करो, लेकिन वहां भी मोहब्बत नहीं थी. तो ये बात है और ये बात मैं इसलिए आया, मैंने बहुत ही कोशिश की वहां. ऐसा नहीं था कि मैं कोशिश नहीं की. मैं ये जो संजय झा जी बोल रहे थे वो भी विटनेस है कि कई लोगों ने, मैंने अकेले नहीं, बहुत सारे जो 3 जनरेशन से पार्टी के साथ, अमरिंदर सिंह थे, थैंक यू, आपने अच्छी ईमानदारी से, सब लोगों ने मेहनत, रोहन गुप्ता, लेकिन उनको जाना पड़ा, इसलिए जाना पड़ा कि वहां सिर्फ चमचों की, जो कुछ किसी ने, जिन्होंने कभी जिंदगी में चुनाव लड़ा नहीं, जिंदगी में चुनाव देखा नहीं, वो ही पार्टी ऑपरेट करते हैं. बहुत सही कह रहे हैं आप अर्जुन मोरवाडिया जी एंड राजगोपालन जी. आप एक लेकर आए थे. मोरवाडिया जी, आप इतने दशकों तक कांग्रेस में रहे, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर. ये बिलेटेड रियलाइजेशन क्या तब आ रहा है जब आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? ऐसा नहीं है. देखो, राहुल गांधी की जो आने के बाद ये बात आप किसी को पूछे, कांग्रेस पार्टी के किसी भी लीडर को, कि कहीं पार्टी में लीडरशिप के साथ एरोगेंस, अहंकार नहीं चलता है. आप अहंकार से बात करेंगे तो ठीक है, जिसको अपने लिए कुछ राजनीति में आए हैं वो आपके साथ रहेंगे, दूसरे लोग लंबे अरसे तक नहीं रहेंगे. कैप्टन अमरिंदर सिंह राजीव गांधी के दोस्त थे, क्यों चले? बहुत सही कह रहे हैं आप, और कांग्रेस को ये इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा. लेकिन लीड्स पर अपडेट्स कमिंग इन. एनडीए लीडिंग इन 47 सीट्स इन उत्तर प्रदेश, 9 सीट्स इन महाराष्ट्र. एनडीए लीड्स इन 17 सीट्स इन बंगाल नाउ, 21 सीट्स इन बिहार. एनडीए लीड्स इन 27 सीट्स इन मध्य प्रदेश, 20 seats in Karnataka, 17 seats in Gujarat, 12 seats in Andhra, 10 seats in Odisha, and 6 seats in Telangana. Nakul Nath trailing in Chhindwara, Prakash Ambedkar leading from Akola, Aam Aadmi Party leading on 3 seats in Punjab. NDA, Hema Malini is leading from Mathura, Begusarai, Giriraj Singh is leading, Tripura, Biplab Dev is leading, Bihar 26 seats पर 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 26 पर एनडीए गठबंधन आगे चल रही है. नगीना सीट चंद्रशेखर आजाद इज अहेड. Let's get a 27 for Samajwadi Party. That's a massive number. Massive number. But for 2 minutes, let's One give at it a to time, Sabha. please. One at a time. Jayam Rom. Yeah, okay. Across UP,
I think it's a very, very pocketed result. Okay, there is this Yadav Shakya belt here just before Awadh and also overlaps with Rohilkhand. There's a big swath of red coming up there. That is Samajwadi Party. There's another pocket of red coming up in Purvanchal near Ghazipur, Salempur, Balia, Ghosi. A pocket of red is coming up there, which is Samajwadi Party. And of course, surprising picks for the Samajwadi Party in Bundelkhand. What's this one splash of yellow here? What that's seat is that? Chandrasekhar Azad. Okay. Nagina, Yeah. if this holds, we are seeing an alternative Dalit face come up if Mayawati declines. Completely eroded now. So Mayawati is completely eroded now because her vote is now scattered. This yellow is Chandrasekhar Azad, who's taken the That symbol is K. an important thing to know. What about this side If of that stays, of course. Lalganj? We are seeing Samajwadi that's what I'm Party. saying. Azamgarh, no surprises there. Dharmendra Yadav, Ghosi, Rajiv Rai. Hung parliament, 100% is heading for a hung parliament. Early trends tell you that the BJP so-called tsunami is not happening. Thank you so much, Mr. That Sujit. so-called tsunami is not happening. Hung parliament? Yep. Okay. It is 72 seats as per what we've got from the Congress department. I think Congress will get 75. Mahendra Nath Pandey leading from Chandauli, Tejasvi Surya leading from Bengaluru South, Balaghat, Congress, Samrat Singh is leading, Jahanabad, RJD is Nagina would be very leading, interesting. West Delhi, Kamaljeet Sherawat leading with a margin of 1200 votes, Shatrughan Sinha trailing constantly in Asansol. Also, Basuri Swaraj for now trailing, Rekha Patra also trailing, Jaunpur, Kripa Shankar Singh trailing in Jaunpur, Kairana, Ikra Hassan leading, Mandi, Kangana Ranaut leading by about 1300 votes, Shimla BJP leading by about 4000 votes, Kangra BJP is leading by about 15,500 votes, Hamirpur, that's Anurag Thakur's constituency, he's leading by about 4,000 odd votes. In UP's Badohi, Trinamool Congress is leading as of now. Lalitesh Not too Pati early, but Tripathi, it's a very son of interesting Kamlapati one. Tripathi in It's Badohi, near who Banaras. has taken the Trinamool Congress ticket. Yeah. That's his own. It's not under TMC. Yeah, it's his own seat. It's his own seat. Okay. Yeah, he just needs Do we want to take a look But at he'll go West Sappa. Bengal? Because One minute. while, of course, Uttar Pradesh, 80 seats, very important, but one of the swing states this time is West Bengal, where the BJP has really thrown its might into it. And what I want everyone to focus on is the comparison between 2019 and 2024. Take a look at this map over here and how the party-wise comparison from last time. So in 2019, you had the BJP strong in the north and here in the Jungle Mahal area. So the tribal areas, Purulia, etc., the BJP was strong. This time around, though, take a look at the inroads they have made here. And which are these seats? This is Sumendu Adhikari, Kanthi or Kontai as it's known. This, of course, is Suvendu Adhikari's area. The other very important seat is Mathurapur, which is a reserved seat. It's an SC seat. Ashok Purkait is leading right now of the BJP. Earlier it was held by Mohan Jatwa of the TMC. And what is most significant is Mathurapur is one of the seats which not only, Jay, correct me if I'm wrong, not only does it have a large number of Matua voters, but almost 30 to 40% Muslim population. Voters. Yes, and yes. despite that, the BJP leads over here. And right on cue, Tausif Khan is back with us. What do you make of this changed map of West Bengal, where you have Bankura, at least right now, the leads that we have? BJP is leading in 22 seats and 16 with the TMC. Tausif. I believe this number will change. This will not hold. Initial trend in North Bengal to BJP is in expected lines. This is the comparison. How See, is here the you initial? have. No, how is the initial?